starting with global concerns, which will include democracy, human rights, environment, gender, nuclear deterrence, etc. Okay. Now, you might have done democracy from theoretical perspective in your paper 1. So that remains, okay, that is the foundation. But when we are talking about democracy as a global concern, our major breakdown would be that how democracy has managed at international level. Is it the only way of organizing governments across the world? What has been the general trend, especially with the arrival of 21st century? Then why democracy matters? I mean, where do we talk about democracy? So we have sustainable development goals, we have UDHR. They both have mentioned about, how democracy is a public good, so why democracy matters. So we will see 2-3 things. One is it as a public good. Second, democratic peace theory, Michael Doyle. Third is different waves of democratization, 3 waves of democratization. And until 2008-9, it was believed that democracy is skyrocketing. It's going this way. But after global financial crisis, something changed. Okay. Then we have to understand, because this year there was a question, what is democratic backsliding? Okay. Now, democratic backsliding is one of the process of larger thing which is happening, and that thing is known as democratic erosion. Okay, this is the larger term. Now, democratic erosion basically implies that how people's faith in democracy is declining, democratic institutions are increasingly failing to deliver, how executive himself is trying to control the institutions, etc. Democratic erosion is a broader term, and within democratic erosion, 2 components that we have to understand, and one is your democratic backsliding, and other is democratic hollowing. Okay, so ये similar processes हैं, but minute differences हैं दोनों में. And this year the question was asked on democratic backsliding. Now, again we have to understand, through various data, that what exactly happened to democracy and why this is happening to democracy. Then we will come to a specific case study of India. What is happening in India? Okay, so we know what is happening in India, but we have to use scholarly language to define what is happening in India. So this is global democracy or democracy as a global concern. तो ऐसे heading डालिए, democracy as a global concern. Democracy as a global concern. इसमें breakdowns लिख लीजिए हम क्या क्या करेंगे. First we will do what is democracy. What is democracy? Then we will see second element, why democracy matters internationally. Why democracy matters internationally. Okay. Then we will see third element, what is the current state? What is the current state of democracy? Then fourth we will see, what are India's views? What are India's views with respect to using democracy as a tool of diplomacy, ठीक. तो ये जो हमने थर्ड वाला दिखा है कि व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, तो इट इज बैड, रियली बैड. व्हाई? क्योंकि जितने डेटा है वो ये सजेस्ट करते हैं कि लास्ट 18 इयर्स में देयर इज अ कंटीन्यूअस डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी. एंड आज की डेट में अगर देखें तो यू कैन से देयर आर मोर ऑटोक्रेटिक और सेमी ऑटोक्रेटिक कंट्रीज एज कंपेयर टू डेमोक्रेसीज. नाउ ये हुआ क्यों, कैसे हुआ? ठीक है. सो वी नो 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन. किसने दिया ये? हंटिंगटन. ओके. तो जो हमारी थर्ड वेव थी दैट वाज हैपनिंग फ्रॉम 70s ऑनवर्ड. ठीक है. अब जब ये 70s से हो रही थी तो जितने एकेडमिशियंस हैं या थ्योरेटिशियंस हैं, इनका सारा ध्यान एक एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे था. गॉट इट? नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग 2 terms. These terms has been given by a very prominent scholar of comparative politics. He is Adam Pressworthy. Adam Pressworthy. ठीक है. इन्होंने 2 terms इंट्रोड्यूस की. One is known as losers dilemma and other is known as winners dilemma. One is known as losers dilemma, other is known as winners dilemma. Loser dilemma ये बोलता है कि स्पेशली जब आप देखोगे जो थर्ड वेव आई थी दैट वाज मोस्टली कमिंग इन दोस कंट्रीज व्हिच हैव लार्जली रिमेन्ड अनडेमोक्रेटिक, जहां पे ऑटोक्रेट्स रूल करते थे, जहां पे कू हुआ करता था, रेजिम चेंजेस हुआ करती थी. बट अचानक से समवेयर डाउन द लाइन फ्रॉम 70s onwards and especially after 90s when USSR disintegrated and America became a superpower, तब वहां पे डेमोक्रेसी धीरे-धीरे इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही थी. दे वर इन द प्रोसेस. तो उस समय लूजर्स डायलेमा को कैटर किया जा रहा था. लूजर्स डायलेमा क्या होता है कि 2 पार्टीज हैं, एक हारती है एक जीतती है. अब लूजर्स क्या कर सकते हैं? दे माइट से कि इलेक्शन में फ्रॉड था, हम नहीं मानते इलेक्शन के रिजल्ट को, वोट चोरी हो गई या आपने गुंडे भेज करके बूथ कैप्चर कर लिया एंड ऑल दोस थिंग्स. सो थ्रूआउट 80s एंड 90s डेमोक्रेसी वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट मैनेजिंग लूजर्स डायलेमा. उस समय ये सब थ्योरीज दी गई या उस समय ये कोशिश की गई कि हाउ टू रिड्यूस द लूजर्स डायलेमा. उस समय जैसे ये सब थ्योरीज आने लगे, जैसे एक थ्योरी दी गई थी, देयर इज अगेन वन स्कॉलर, सब नए स्कॉलर्स हैं, खुद नहीं पढ़ना पड़ रहा है. ठीक है. देयर इज वन स्कॉलर रस्टो. ठीक है. ये सब लूजर्स डायलेमा की बात कर रहे हैं. रस्टो का ये कहना था कि मतलब जो इवन लूजर्स हैं या ऑटोक्रेट्स हैं या जो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, इवन दे विलिंगली स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस बिकॉज़ दे हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दैट द ओल्ड वेज ऑफ क्लिंगिंग टू पावर विल नॉट वर्क. ठीक है. एंड उनको ये देखने लग जाता है that even citizens, the audience, they are also rewarding the people who are participating in democratic processes. यहाँ पे 2 ways of selections हो रहे हैं. एक तो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं किनको, जो थोड़ा बहुत भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं. सेकेंडली इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में भी ये दिख रहा है कि those who are siding with democracy, they have greater chances of coming forward. So during 80s, 90s and at least due to global financial crisis, most of the world's idea was if you manage losers dilemma, democracy will be sustained. Democracy जो है वो ड्यूरेबल बनती जाएगी. लेकिन किसी ने अदर एस्पेक्ट पे ध्यान दिया नहीं. अदर एस्पेक्ट वाज विनर्स डायलेमा. ठीक है. कि जो जीत गया उसको कितनी इंसेंटिव्स है डेमोक्रेसी बनाए रखने में. नाउ इट वाज लार्जली रियलाइज्ड कि इवन इन द कंट्रीज लाइक अमेरिका, जहां पे यही एडम इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि अमेरिका में कभी भी डिक्टेटरशिप आने के कितने चांसेस हैं, 1 in 1.8 मिलियन.
ट्रम्प मिल गया हमको इतनी जल्दी, गॉट इट? सो दे नेवर थॉट अबाउट समथिंग नोन एज विनर्स डायलेमा. व्हाट इज विनर्स डायलेमा? जो जीतना भी है इलेक्शन, वो ये कोशिश करेगा कि हम इंस्टीट्यूशंस को और हर चीज को अपनी डायरेक्शन में मोल्ड करें, सो दैट वी कैन ऑलवेज रिमेन अ विनर. एंड डेमोक्रेसी में हमेशा देखा गया है दैट इवेंचुअली देयर इज रिटर्न ऑन स्केल्स. मतलब आपने थोड़ा सा कुछ किया, आपके फेवर में बैलेंस बहुत ज्यादा आ जाता है. तो अगर आप कांग्रेस को देखोगे तो टिल 1980s व्हेन कांग्रेस वाज सिंगल पार्टी सिस्टम, कांग्रेस यूज्ड टू डू एक्जेक्टली द सेम थिंग. और सबसे बड़ा डायलेमा आज की डेट में ये है दैट इफ वी टॉक अबाउट रेफरी इंस्टीट्यूशंस, क्या होती है रेफरी इंस्टीट्यूशंस? इलेक्शन कमीशन हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कैग हो गया, दुनिया भर की जितनी रेफरी इंस्टीट्यूशंस हैं whose function is majorly to ensure free and fair democracy होती है, इलेक्शन होते हैं, ये सारी रेफरी इंस्टीट्यूशंस जो है ये तब काम नहीं करती हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ये तब काम करती हैं जब जरूरत नहीं होती है. गॉट इट? सो कांग्रेस वाज डूइंग एक्जेक्टली द सेम थिंग, बट देयर इज अ डिफरेंस. कांग्रेस वाज अपॉर्चुनिस्ट रादर देन आइडियोलॉजिकल. बीजेपी इज आइडियोलॉजिकल रादर देन बीइंग अपॉर्चुनिस्ट. तो इंडियन केस स्टडी हम देखेंगे कि इंडिया में एक्जेक्टली विनर डायलेमा में क्या किया जा रहा है. तो अगेन आई डोंट नो, आपने मिलान वैष्णव के बारे में आया होगा कभी? तो मिलान वैष्णव ने एक्जेक्टली इंडिया के बारे में यही लिखा है दैट इन इंडिया एट लीस्ट सिंस 2014 वी आर एक्सपीरियंसिंग द सिंड्रोम ऑफ विनर्स डायलेमा, जिसमें कि जितनी भी रेफरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारी या तो इंटरफियर की जा रही हैं या निग्लेक्ट की जा रही हैं या दे आर बीइंग फोर्स्ड टू रिस्पेक्ट द एग्जीक्यूटिव. तो थ्री प्रोसेसेस आर हैपनिंग टू इंडियन डेमोक्रेसी. वन इज डिफरेंस, अदर इज इंटरफेरेंस एंड थर्ड इज योर निग्लेक्ट. ठीक है? तो जैसे बीजेपी ने खुद लोकपाल बनाया रोड होकर के, कितना लोकपाल में पोस्टिंग होती है? कुछ नहीं होता, निग्लेक्ट. इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स है, सीआईसी है, बनाया बीजेपी ने नहीं है, इट्स अ न्यू इंस्टीट्यूशन. क्या हो रहा है उसका? निग्लेक्ट, पोस्ट नहीं की जाती. सुप्रीम कोर्ट है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इज फोर्स्ड टू रिस्पेक्ट एग्जीक्यूटिव. हाउ? वो क्या कुछ कोशिश करेंगे, कोलिजियम सिस्टम में पिक एंड चूज करेंगे. ठीक है? सो दैट दे अल्टीमेटली फोर्स जुडिशरी टू गिव द नेम्स व्हिच आर फेवरेबल टू द एग्जीक्यूटिव. इलेक्शन कमीशन है, वो तो पूरी डिफरेंस में जा चुकी है एंड पूरा इंटरफेरेंस चल रहा है. ओके, फुल ऑन. ठीक है? सो इंडियन केस स्टडी विनर्स डायलेमा. So when today we talk about the biggest threat to democracy as an international project is not loser's dilemma, it's the winner's dilemma. And winner's dilemma is something which is coming from within. आपको बाहर से अमेरिका भी नहीं लगेगा, या you won't need some non-state actor to interfere कि coup कर दिया या मिलिशिया इंट्रोड्यूस कर दी या बाहर से वॉर कर दी. नो, एवरीथिंग इज हैपनिंग इंटरनली एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग. तो हमने स्टार्टिंग में एक टर्म देखा था डेमोक्रेटिक इरोजन. उसमें दो टर्म्स, दो कंपोनेंट्स बताए थे. वन इज डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, अदर इज योर डेमोक्रेटिक फॉलोइंग. बैकस्लाइडिंग का मीनिंग एक्जेक्टली यही है दैट व्हाट विनर्स डू आफ्टर कमिंग टू पावर. दे स्टार्टेड वीकनिंग द इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम विदिन. सो टुडे इफ डेमोक्रेसी एज अ ग्लोबल कंसर्न इज फेसिंग द बिगेस्ट थ्रेट, दैट इज कमिंग फ्रॉम इंटरनल प्रेशर्स, नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर. वेरी चीप. फॉलोइंग का मतलब क्या है कि जब आपकी इंस्टीट्यूशंस ही बेकार हैं, दे आर नॉट डिलीवरिंग and people know that whether they participate in voting or not कुछ फर्क पड़ना नहीं है. People start losing faith in democratic institutions and that is what is known as democratic following. उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप कैसे भी आ रहे हो. ठीक है? आप जैसे इंडियन केस में देखो, people rejoice when BJP stumble upon any of the institutions. लोगों को मजा आता है. ठीक है? They are not concerned कि भाई आज कल किसी का हुआ है, कल उन्हीं का कटने वाला है. But they are not worried about that. This is democratic following. So both things are happening and biggest concern is कि outside threats से ज्यादा internal threats हैं democracy को. ठीक है? तो winners dilemma and losers dilemma. अब जनरली ये सोचा जाता था कि there are two kinds of accountability. One is your vertical accountability and another is horizontal accountability. What is horizontal accountability? Other institutions keeping a check and balance. What is vertical accountability? People. ठीक है? तो वोट, रेगुलर इलेक्शंस, वोटिंग वगैरह से also checked by civil society. एक नई चीज जो देखने मिली है because we are experiencing democratic backsliding is that civil society itself has become an arena of control. And civil society में जो politics होती है, वो politics होती है with the identification of political community. कौन है जो true citizen है, कौन है जो भारतीय है, कौन है जो international है. All these kinds of politics happen in civil society. Earlier, civil society used to be a bastion of protection of democracy. Today, civil society itself has become a way to erode democracy. ये भी एक globally ये phenomenon देखने को मिला है. चाहे Latin American countries हो, चाहे European countries हो, वहाँ पे civil society is being captured to question who is the political community. And civil society is controlled by government vertically. ठीक है? Center से control करते हैं ताकि civil society में narrative create किया जाए and people keep fighting among themselves regarding who is a citizen, who is a non-citizen. तो ये दो phenomena नए देखने को मिले हैं at least after 2008 financial crisis. Got it? तो global concern में ये हमको जानना है. Then, when it comes to India and how India perceives democracy and democracy as a tool of diplomacy, we must understand that India never believes in forcibly promoting democracy. Democracy बहुत important है India के लिए, no doubt about it. But India always uses subtle means of promoting democracy because India always links democracy with development. तो इसमें India क्या करता है? जैसे India training दे देगा elections करवाने की, EVM भेज देगा. ठीक है? We have established certain training institutions under Election Commission of India within India, and we have trained so many people. Then ITEC program में हम वहाँ की grassroots लोगों को help करेंगे, democratic resilience बढ़ाएंगे. But this has happened generally outside neighborhood. Within neighborhood, India has used assertive tools to promote democracy. Be it Sri Lanka, be it Bangladesh, be it Maldives, etc. But especially after 2000s, India has narrowed down on directly using democracy as a tool. लेकिन having said that, हम चूंकि वेस्ट के क्लोज आए आफ्टर 2000 बीट यूरोप बीट अमेरिका एक्सेट्रा, तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग जो रही दैट डेमोक्रेसी मैटर. एंड जब हमको लगता है कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाना और डेमोक्रेसी प्रमोट करना हमारे लिए बेटर है, वी प्रमोट दैट. एंड व्हेनेवर वी थिंक दैट वी हैव टू पिक एंड चूज बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नेशनल इंटरेस्ट, वी चूज नेशनल इंटरेस्ट. जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना तब बता रहे थे शी इज अ डूम प्रोजेक्ट एंड शी इज अ थ्रेट टू बांग्लादेश डेमोक्रेसी. स्टिल वी क्लिंग ऑन टू हर. गॉट इट? सो इंडिया का यूज ऑफ डेमोक्रेसी एज अ टूल इज वेरी इनकंसिस्टेंट. वी बिलीव दैट डेमोक्रेसी शुड बी प्रमोटेड. वी डोंट डू इट डायरेक्टली, वी डू ऑल दोस थिंग्स इनडायरेक्टली. स्पेशली आफ्टर 2000 since we started coming very close to European powers as well as America, we started looking democracy more and more like an international issue. इसलिए आप देखोगे हमने अमेरिका के साथ मिलकर के यूएन में एक डेमोक्रेसी डेवलपमेंट फंड वगैरह भी बनाया. उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया का ही है. देन अगर आप देखोगे जॉइंट स्टेटमेंट्स इंडिया के, यूरोपियन यूनियन के, इंडिया के, फ्रांस के, इंडिया के, अमेरिका के, सब में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी शब्द ऑटोमेटिकली आ जाता है. देन व्हेन बाइडेन स्टार्टेड ग्लोबल डेमोक्रेसी समिट, इंडिया यूज्ड टू बी अ वेरी एंथुसियास्टिक पार्टनर टू दैट. गॉट इट? अब वी विल हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट इज हैपनिंग. अब ट्रम्प जो है जिस हिसाब से वेनेजुएला को कैप्चर किया, एक रीजन तो वही कह रहे हैं डेमोक्रेसी बैकस्लाइडिंग एंड ऑल. तो वी कैन सी दैट अमेरिका गोइंग बैक टू द ओल्ड पॉलिटिक्स ऑफ यूजिंग डेमोक्रेसी एज अ टूल कि भैया तुम डेमोक्रेटिक नहीं हो तो तुम्हारे हम डेमोक्रेसी बढ़ाने आ रहे हैं. ठीक है? तो मोदी जी को थोड़ा संभल के रहना चाहिए. ठीक है? आज ही उसने वार्निंग दी है ट्रम्प ने मॉर्निंग में, आई विल पुट मोर टैरिफ्स ऑन इंडिया. क्या पता भाई, पागल इंसान. ठीक है? ठीक. सो ये चारों चीज हमको देखनी है. गॉट इट? चलिए इस बार क्वेश्चन बैकस्लाइडिंग पे आया है. ठीक है? चलिए देखिए व्हाट इज डेमोक्रेसी. व्हाट इज डेमोक्रेसी?
व्हाट इज डेमोक्रेसी? ठीक है, तो फर्स्ट लिखो नैरो डेफिनेशन, नैरो डेफिनेशन लिखो गिवन बाय एडम प्रेसवॉस्की, एडम प्रेसवॉस्की। देखो democracy is a system, democracy is a system in which parties lose elections, in which parties lose elections। ठीक है, तो नैरो क्यों है? केवल आपने इलेक्शन बना करके रख दिया। सेकंड लिखो ब्रॉड डेफिनेशन, ब्रॉड डेफिनेशन। ठीक है, तो लिखो दिस इज गिवन बाय आइडिया, IDEA, आइडिया, राइट इन ब्रैकेट फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, आइडिया। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो दे पब्लिश अ रिपोर्ट द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लिखो अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू देम democracy is a popular control, democracy is a popular control over decision makers, over decision makers and political equality of those, and political equality of those who exercise that control, who exercise that control। ठीक है, इसमें के नेक्स्ट पॉइंट देखिए they have identified 5 attributes of democracy, 5 attributes of democracy। तो पहले लिखिए representative government, representative government, डैश करके लिखिए it has 4 sub dimensions, it has 4 sub dimensions। लिखिए पहले लिखिए clean elections, clean elections, clean साफ सुथरे। सेकंड लिखिए inclusive suffrage, inclusive suffrage, तो इनके हिसाब से SIR जो है वो एक्सक्लूसिव है, तो टीआई इसलिए जा रहा है कि हटाना है। ठीक है, थर्ड लिखिए प्री पॉलिटिकल पार्टीज, प्री पॉलिटिकल पार्टीज एंड फोर्थ इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब देखो इंडिया में क्या क्या है इसमें, इलेक्शन क्लीन है, क्लीन स्वीप है, क्लीन तो नहीं, फिर इंक्लूसिव सफरेज, सफरिंग है, सफरेज नहीं है। ठीक है, प्री पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लगता तो नहीं, एक को रानी चला रहा है, एक को बाडरा चला रहा है। ठीक है, फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये है इलेक्ट हो जाती है। ठीक है, लाइक सेकंड एट्रीब्यूट देखो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स देखो it has 3 dimensions, it has 3 dimensions। first right access to justice, access to justice, and second right civil liberties, civil liberties। ये दोनों मिलाकर के क्या हो गए, लिबरल डेमोक्रेसी। वैसे ब्रैकेट लगाइए दोनों में, डैश करके लिखिए लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी। थर्ड डायमेंशन लिखिए सोशल राइट्स एंड इक्वालिटी, सोशल राइट्स एंड इक्वालिटी। ये क्या हो गया कंपोनेंट सोशल डेमोक्रेसी, तो डैश करके लिखिए सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये है इंडिया में। अरे वैसे है, इलेक्शन में कहां होती है, लाडली केवल बहने हैं ना, भाई थोड़ी ना है, बैचलर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है, उनको कहते हैं तुम छड़े हो, बेकार हो। ठीक है, हम लोग के लिए तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो सेकंड एट्रीब्यूट, राइट, थर्ड एट्रीब्यूट, राइट, थर्ड एट्रीब्यूट चेक्स ऑन गवर्नमेंट, checks on government, right, it has 3 dimensions, it has 3 dimensions। first judicial independence, judicial independence, next effective parliament, effective parliament, and third media integrity, media integrity। अर्नब की जागी है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि उसको 15 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। ठीक है, सुधीर चौधरी को मिल गया, ये चौधरी हो रहे हैं। ठीक है, नाउ राइट द फोर्थ एट्रीब्यूट impartial administration, impartial administration। ठीक है, इसके 2 डायमेंशंस हैं, राइट, 2 डायमेंशंस। फर्स्ट इज प्रिडिक्टेबल एनफोर्समेंट, प्रिडिक्टेबल एनफोर्समेंट। ठीक हो, तो आप चाहे राम रहीम हो या उमर खालिद हो, पेरोल दोनों को मिलनी चाहिए, ऐसा है, समझ जाओ। ठीक है, सेकंड डायमेंशन लिखो एब्सेंस ऑफ करप्शन, एब्सेंस ऑफ करप्शन। ठीक है, तो बिल्कुल एब्सेंट है करप्शन, वी डोंट टॉक अबाउट इट, वी डोंट राइट अबाउट इट, वी डोंट लुक अबाउट इट, होल इंडिया इज अंडर वीड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी। ठीक है, फिफ्थ लिखो, फिफ्थ एट्रीब्यूट पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट, पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट। देखो it has 4 dimensions, it has 4 dimensions, right, first civil society participation, civil society participation। ठीक है, तो अन्ना हजारे कहाँ है? वो क्या ही आएंगे, वो कहीं और जाएंगे सीधे, ऊपर जाने का समय आ गया है। ठीक है, कैसी सिविल सोसाइटी है,
जो सेनेगर के सपोर्ट में आकर के खड़ी होती है, आई सपोर्ट सेनेगर, ठीक है, ये हाल है सिविल सोसाइटी के। दूसरी सिविल सोसाइटी है बॉलीवुड, वो धुरंधर में लगी हुई है, ठीक है। चलिए सेकंड लिखिए, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट लिखिए थर्ड डायमेंशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड फोर्थ लिखिए, सब नेशनल इलेक्शंस, सब नेशनल इलेक्शंस, ठीक है। तो दिस इज द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो कि हमको ग्लोबली देखनी चाहिए, ठीक है। नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो व्हाई डेमोक्रेसी मैटर्स, व्हाई डेमोक्रेसी मैटर्स। तो फर्स्ट राइट, it has both, it has both intrinsic as well as instrumental value, it has both intrinsic as well as instrumental value। किसने बोला है? अमर्त्य सेन, तो राइट इन ब्रैकेट अमर्त्य सेन, ठीक है। इसमें लिखिए, डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड, डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड, अंडरलाइन पब्लिक गुड, ठीक है। देखो इट मींस डेमोक्रेसी ऑफर्स, डेमोक्रेसी ऑफर्स कंडीशंस for non-violent conflict management, non-violent conflict management, which leads to sustainable peace in society, sustainable peace in society। देखो underline sustainable peace and right according to Adam Przeworski, according to Adam Przeworski, यही भाई साहब आएंगे बार-बार, ठीक है, बिकॉज इनकी बुक का नाम भी लिख लो, राइट इन ब्रैकेट बुक नेम, देखो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। देखो according to him democracy is a system of, democracy is a system of processing conflicts, processing conflicts, ठीक है। देखो देखो that is why, next one, that is why article 21 of UDHR establishes the right to political participation, right to political participation by emphasizing, write a single quote, we the people, we the people, we the people, ठीक है, we the people। next point देखो, sustainable development goal 16 sustainable development goal 16 builds on the premise, builds on the premise that, write a single quote, governance matters, governance matters, underline governance matters, drop an error, right, it means